ad interim order was obtained against the ECP that it should not pass a final order till the determination of writ petition number 5791. Subsequently, writ petition number 5791 was disposed of by the Peshawar High Court by directing the ECP to decide the matter by 22nd December 2023. The ECP passed order dated 22nd December 2023 in which it held that PTI had not complied with the directions issued by the ECP and it failed to hold intra-party elections in accordance with PTI's constitution, the Act and the election rules of 2017, with the consequence that Section 215(5) of the Act would be attracted, pursuant to which PTI was declared ineligible to obtain the election symbol which it had applied for. The order of ECP dated 22nd December 2023 was assailed before the Peshawar High Court in writ petition number 6173, which was allowed with a short order dated 10 January 2024, detailed reasons whereof was given subsequently. Two representatives of PTI had filed another writ petition in the Lahore High Court bearing number 287 of 2024 against the ECP, which was disposed of by learned single judge with a order dated 3rd January 2024, holding that the prayer sought therein could only be granted if Section 215(5) of the Act was declared ultra vires a constitution. But since the same was not challenged, the relief sought could not be granted. It was also mentioned that the petition was pending in the Peshawar High Court. An intra-court appeal was filed against the order of the learned single judge. However, a divisional bench of the Lahore High Court upheld the order of the learned single judge. Petition number 81171 and 332 remain pending in the Lahore High Court. Writ petition number 6173 filed in the Peshawar High Court did not disclose that writ petition number 81171 was pending adjudication before a 5-member bench of the Lahore High Court, even though it pertained to the very same matter, that is the holding of intra-party elections in PTI. Writ petition number 6173 filed before the Peshawar High Court was not made tenable because the same issue of intra-party elections had already been assailed by PTI before the Lahore High Court. If two and more courts have concurrent jurisdiction, while a petitioner may elect to avail of his remedy before either court against. It transpired that ECP had passed orders against 13 other. Production of a certificate stating that such elections were held would not suffice to establish when the challenge was thrown to such an assertion. Nor, in our opinion, should ECP concern itself with minor irregularities in the holding of a political party's elections. However, in the instant case, not even prima facie evidence was produced to show that a semblance of elections had been held. 14 PTI members with stated credentials had complained to ECP that elections had not been held. These complaints were brushed aside in the writ petition by simply asserting that they were not members of PTI and thus not entitled to contest elections. But this bare denial was insufficient, particularly when they had credibly established their long association with PTI. And if any member of a political party is expelled, it must be done in accordance with Section 205 of the Act, but no evidence in this regard was forthcoming. Democracy founded Pakistan, a fundamental aspect of which is the ability to put oneself forward as a candidate and to be able to vote, both within a political party and in general elections. Anything less would give rise to authoritarianism, which may lead to dictatorship. The ECP is a constitutional body, and amongst its duties are those mentioned in the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, Article 219E of which stipulates that ECP must also undertake such functions as prescribed by law, which would include those mentioned in the Act. Section 208 of the Act mandates that political parties must hold intra-party elections periodically, and that a period not exceeding 5 years elapse within 2 elections. It further stipulates that every member of a political party be provided with an equal opportunity of contesting election for any political party office. Members of PTI were not provided nomination papers and
elections held. Incidentally, the notice issued by PTI Secretariat that their elections were to be held in Peshawar, but did not mention the venue. And then the venue was shifted to Chamkali, which is a village adjacent to Peshawar. Neither before the Lahore High Court nor before the Peshawar High Court any provision of the Act, including Section 2 and 15(5), was challenged. The observation of the learned judges that the provision of the law was absurd was uncalled for, particularly when no provision thereof was declared to be unconstitutional. Surprisingly, no declaration was sought nor given that intra-party elections were held in PTI, let alone that the same were held in accordance with the law. If it had been established that elections had been held, then ECP would have to justify if any legal benefit to such a political party was being withheld. But if intra-party elections were not held, the benefits accruing pursuant to the holding of elections could not be claimed. We also do not agree with the learned judges that the ECP did not have, quote, any jurisdiction to question or adjudicate the intra-party elections of a political party. If such an interpretation is accepted, it would render all provisions in the Act requiring the holding of intra-party elections illusory and of no consequence and be redundant. Therefore, for the aforesaid and detailed reasons to follow, this petition is converted into an appeal and allowed by setting aside the June order and judgment of the Peshawar High Court passed in WP number 6173P of 2023. Resultantly, the order of the ECP dated 22 December 2023 is upheld. Thank you. तो सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया है। इलेक्शन कमीशन की अपील को मंजूर कर लिया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ला छिन गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ला ले लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ला छिन गया है। इलेक्शन कमीशन की अपील भी मंजूर कर ली गई है। तो पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको कलअदम करार दे दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बल्ला था और अब उनके पास वो बल्ला इंतखाबी निशान नहीं रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ला छिन गया है और इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो अपील की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने उस अपील को मंजूर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। बिल्कुल, पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया गया है। पीटीआई से बल्ला छिन गया। इलेक्शन कमीशन की अपील भी मंजूर कर ली गई है। ये महफूज फैसला जो कि सुनाया गया है चीफ जस्टिस की जानिब से 3 रुकनी बेंच ने इस हवाले से समाअत की थी और फिर फैसला सुनाना शुरू किया, जिसमें जस्टिस काजी फायजीसा ने ये फैसला सुनाना शुरू किया और उसके बाद अब ये सामने आया है कि सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। पीटीआई से बल्ला छिन गया। इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर कर ली गई है। राजा मोहसिन हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। राजा मोहसिन एजाज, बताइए फैसले में क्या कहा गया है? देखिए, इस फैसले में ये कहा गया है कि ये हाई कोर्ट से ऐसा नहीं हो सकता कि 2 हाई कोर्ट्स में एक साथ मामला चले। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो इंतखाबी निशान बल्ला है वो नहीं मिलेगा। पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला था उसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कलअदम करार दे दिया है और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की अपील थी पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ, उसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मंजूर कर लिया है। और ये मुख्तसर हुक्मनामा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अब से कुछ ही देर पहले काबिल अदालत में सुनाया और ये भी कहा गया है कि जो तब्दीली वजूहात हैं, जो तब्दीली फैसला है वो बाद में जारी किया जाएगा। जबकि अब से कुछ ही देर के बाद इस फैसले की तहरीरी कॉपी के हवाले से चीफ जस्टिस ने अपना जो मुख्तसर फैसला सुनाया उस दौरान रिमार्क्स में ये कहा कि उसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पर अपलोड भी कर दिया जाएगा। इस सिलसिले में आज जब ये समाअत चल रही थी तो इस सिलसिले में तमाम तरीक़ैन की जानिब से तफसीली दलाइल दिए गए थे और तकरीबन 7:30 बजे केस का फैसला महफूज किया गया था। और जब ये फैसला महफूज किया गया तो उसके बाद एक तवील इंतज़ार किया गया। तकरीबन 7:30 बजे ये फैसला महफूज किया गया और 11:25 पर फिर ये मुख्तसर फैसला बेंच कमरा अदालत नंबर 1 में आया और उसकी जानिब से सुनाया गया। इस फैसले की रोशनी में इसके नताइज ये हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतखाबी निशान नहीं मिलेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक इंतखाबी निशान पर बतौर सियासी जमात इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेगी जो 8 फरवरी को हो रहे हैं। और इसके साथ साथ पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला था उसे भी कलअदम करार दिया गया। मुख्तसर फैसले में ये भी कहा गया जिसमें कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पेशावर हाई कोर्ट में जो मामला लेकर गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ना ही पेशावर हाई कोर्ट ने इंतखाबात जो थे पीटीआई के इंट्रा पार्टी उन्हें दुरुस्त करार दिया, ना ही जो है वो इस सिलसिले में कोई इस्तदा की गई थी
पेशावर हाई कोर्ट से। और अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो मुख्तसर फैसला सुनाया गया है, इस फैसले की रोशनी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर सियासी जमात एक इंतखाबी निशान के साथ अब 8 फरवरी को होने वाले जो इंतखाबात हैं उनमें हिस्सा नहीं ले सकेगी। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतखाबात के हवाले से जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ था उसे तस्लीम कर लिया गया है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इलेक्शन सिंबल के हवाले से जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला था जिसके खिलाफ अपील की गई थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, उसे अब मंजूर कर लिया गया है। और जो इंतखाबी निशान बैच है वो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं मिलेगा। आज दौरान समात एक मौके पर बैरिस्टर अली जफर जो PTI की नुमाइंदगी कर रहे थे, उनकी जानिब से ये इस्तदा भी की गई कि उन्हें कोई भी एक निशान दे दिया जाए। वो किसी मखसूस निशान की को नहीं मांग रहे, यानी उन्हें अगर बैच के अलावा कोई भी और निशान दिया जाए लेकिन उन्हें बतौर सियासी जमात एक निशान पर इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त दी जाए। ताहम ऐसा नहीं हुआ और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो अपील थी उसे मंजूर किया गया। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंसाफ पार्टी इलेक्शन जो तस्लीम नहीं किए गए थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, उस फैसले को बरकरार रखा गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम किया गया है, जबकि जो तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ था इन इंतखाबात के हवाले से उसे मंजूर नहीं किया गया। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर सियासी जमात एक इंतखाबी निशान पर इंतखाबात में हिस्सा